Home buyers of Uttar Pradesh have urged the newly appointed Chief Minister Yogi Adityanath to revoke the diluted Real Estate Regulatory Act rules notified by the earlier Akhilesh Yadav government and notify fresh rules in line with the ones set by the centre. National Association of Home Buyers, Fight for RERA, through various tweets and a letter has put forth their demands to the new CM, while distressed home buyers under the banner of Noida Extension Flat Owners Welfare Association have also written to Adityanath for a stringent RERA. Massive mandate for BJP in the state has revived the hopes of lakhs of home buyers stuck in various projects having invested their lives' savings. While UP was one of the first states to notify RERA rules after the Central Act came into force, buyers allege that the rules have been diluted. And to discuss this more on the home buyers' grievances and their expectations from the new government, we have with us retired Colonel T.P. Tyagi, founding member, Fight for RERA, the NCR chapter, and also Ashok Vardhan. He's the secretary of Noida Extension Flat Owners Welfare Association. So thank you very much for joining us. Colonel Tyagi, I'll start with you. RERA, you feel that maybe the new CM will be more positive towards repealing the earlier RERA and maybe getting you a more user-friendly RERA? Yes. फाइट फॉर रेरा इज ए पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वी रोट टू गवर्नर ऑफ यूपी एंड गवर्नर ऑफ यूपी हैज़ ऑलरेडी रिटर्न टू द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दैट द डाइल्यूटेड रूल्स विच यू हैव ऑलरेडी नोटिफाइड दे शुड बी टेकन बैक, दे शुड बी रिकन्सिडर्ड। दिस इज द लेटर मैम फ्रॉम द गवर्नर। द पॉइंट इज दैट all states were to make these rules by 31st October 2016. Only 3 states made, others are yet to make. और उसमें भी यूपी ने जो बनाए वो ऐसे डाइल्यूट बनाए कि उसमें बिल्कुल नंगी तरह से बिल्डर्स को मदद की गई है। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में सेक्शन 2, सेक्शन 4 और सेक्शन 35, इन 3 के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने ये चेंज कर दिया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो एक्ट के मुताबिक आवश्यक था, मैंडेटरी था, बोले साहब इसको डिस्पेंस भी किया जा सकता है अगर किसी सोसाइटी का RWA मेंटेनेंस कर रहा है या AOA मेंटेनेंस कर रहा है। फिर उन्होंने ये कह दिया कि फाइनलाइजेशन के टाइम जो प्लान और स्पेसिफिकेशन है वो दे दीजिए। इसका मतलब उससे पहले जो 15 दफ़े आपने चेंज किया है उसका कुछ नहीं होगा। और फिर कंपाउंडिंग के रूल उसमें कह दिया कि 10% मैक्सिमम होगा और जो जेल टर्म है उसको उसके प्रोपोर्शनेट कर दिया। मीन्स द रूल्स हैव बीन डाइल्यूटेड इन सच अ वे। हरियाणा ने आज तक बनाया ही नहीं, गुजरात ने इनकम्प्लीट कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि साहब जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसका जिक्र ही नहीं किया और बल्कि ये कह दिया कि साहब 1 नवंबर 2000। Just sticking to the UP RERA, Ashok, you have written a letter, your association has written a letter. Have you got any response from the government as yet? No, actually we have met Mr. Pankaj Singh also yesterday. Regarding the letter also, I wrote the letter to the Chief Minister also, Mr. Yogi Adityanath. And we hope that the new government will take it seriously and try to implement this act in its own spirit actually. The intention, the major issue of this act problem is the intention of the government. Last 1 year, the UP government basically didn't try to implement this act in its own spirit actually. The several provisions of the act were diluted and all basically. The major issue is the applicability of the act on the existing projects actually. This is diluted. This is one of the points, like when the maintenance handover has been given to the society, the rules will not be applicable to the society. So this is shocking and surprising basically. We will thank for the India government, central government, and then after several efforts of RERA and all the things basically, the act was passed in March 16 basically. But the intention was of the act was to implement all the states, which didn't happen at all. I don't think so. But yeah, we'd hope that a new government will take it seriously and will try to implement this as soon as possible in its own spirit and try to
appoint authority also in a transparent manner, basically, which is the crux of this act actually. Absolutely. We should be Colonel independent from the Tyagi, government without any pressure of the government actually. Okay, Colonel Tyagi, how do you intend to take this forward? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये कहा है कि ना केवल स्टेट, सेंटर ने भी प्रॉब्लम की है। जो हुपा ने एक ड्राफ्ट रूल्स बनाए थे, उसके अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जगह एक नई चीज़ ले आए। तो केवल स्टेट में चेंज नहीं होना, ये सेंटर में भी चेंज होना है। और अगर होना है तो इसके लिए हमारी सबसे पहली डिमांड है, जो हमारे नेशनल कन्वीनर अभय उपाध्याय की तरफ से आई है, कि 10 मार्च को जिस रोज ये राज्यसभा में बिल पास किया गया, उसको होम बायर्स डे डिक्लेयर किया जाए। अगर वीमेंस डे हो सकते हैं, वाटर डे हो सकते हैं, सब तरह के दिन है, तो एक होम बायर जिनकी संख्या, और वो हमने भी उठाया था मुद्दा जी प्रॉपर्टी शो में, बिल्कुल हमने भी किया था। जी लेकिन आज करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स हैं जो 26 शहरों के अंदर चल रहे हैं, और ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स ही प्रॉब्लम है। इसमें 10 लाख फैमिली इन्वॉल्व है एवरी ईयर, और 3 लाख करोड़ रुपए का इसमें बजट है। आप इमेजिन कीजिए, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। Okay. So quickly, Mr. Vadan, from you also, how do you intend to take this forward? Because you've written a letter. If you keep waiting for the response, you might get it, you might not get it. But do you have any other action plan? Yeah, we are waiting for the reply for the government, basically from the Chief Minister, and we are also planning to meet Mr. Yogi Adityanath in Lucknow also. We are trying to fixing a date basically, and try to get an appointment with the Chief Minister also. Okay. So this is the plan basically. Let us hope for the best. Okay. Actually. वो डेट फाइट फॉर रेरा ने भी मांगी है। Great. Major issue was actually the data was basically earlier there is a nexus between builders, police, administration, authority, and all. Yes, absolutely. We hope that the government listens to you, and this is a new government. Yeah. So I'm sure you are hopeful, and we are also hopeful that something will happen about the dilution of RERA. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you.